We are live now. Hello everyone. मेरा समस्त छात्री पिला माने मानकु समस्तंकु वेब एजुकेशन चैनल को मोस्ट वेलकम रे पिला माने वेलकम गुड आफ्टरनून डे समस्त गुड आफ्टरनून केमती अछ पिला टिके कहबरे समस्ते केमती अछ भल अछ ना तो भल अछ ना बहुत बढ़िया चलो देखो तमन को पई गोटे क्लास नै आछि पिला माने परीक्षा दर मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर करबा पिले बहुत इंपोर्टेंट होबा पई जाउची तमन को पई क्लास टी अछि ना ए क्लास टी जो माने मिस करछो ना पिले बहुत सारा जिंस हरै दबो तमे बुझी परछ ना तो आज काम करिबा जेहेतु आज बहुत पिलांकर हम देखिली जे सेमानकर कोन ना पिला माने बहुत सारा पिलांकर देखिली प्रॉब्लम होची या जे माने शॉर्ट क्वेश्चन भी भूल करछथि परछ तार अर्थ कोन जानछ ना तार अर्थ होची या जे तमाने पिले सठिक रूप रे ताकू पदार्पण करूनो माने देखि पार न पिला माने बुझी होची तो तो भल भाबरे पिले देख हला हमरो बहुत सारा जिंस बे तमनको पढेबी पिले रिपोर्ट राइटिंग पढेबी तमन एप्लीकेशन लिखिबा पढे देबी बुझी परछ ना पिला माने ता सहित तम माने केमती पासेज को अटेंड करबो केमती एसे तमनको सिलेक्टेड देबी एई दी दिन भितरे मु तुमको प्रिपेयर कर देबी बुझी गलो ना पिले तो देखो तमे जेमती आसीबो पिले क्लास को देखो गोटे गोटे लाइक कर दबो समस्त आ ता पूर्वरु कह देबा पई कहि रियली सॉरी पिले तो जेहेतु क्लास करि पार नथली किछि प्रॉब्लम पई तमे तो जानिथिबो पिले टेलीग्राम चैनल ले केमती कोन प्रॉब्लम हेतिला बोली ना किछि कथा नै तमनको पई मु पुनी आछि लास्ट डे बहुत भलो भाबरे बुझिबो जदि न बुझि परछ मते 20 थर पचालेबे मु कहि देबी परछ तो चलो देखो पिले बहुत इंपोर्टेंट हबो इंग्लिश रो पेपर टी आज इवनिंग रे जो क्लास टा करबी ना मु से इवनिंग क्लास टी केही मिस करबोनी पिले क्लास को केही मिस करबोनी बुझि परछ तो बहुत इंपोर्टेंट बुझि होची चलो तो देखो कोन देछि देखो पिले तो मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर आगो जिबा पिला माने देखो देछि रे हला सब्जेक्टिव देखो ऑब्जेक्टिव एक नंबर क्वेश्चन देछि व्हाट अकॉर्डिंग टू सीएफ अलेक्जेंडर stood our lives tell God is great God has kon dechi created all things well and wisely God's creation is beautiful and wonderful God is kon dechi omnipresent तो एक नंबर सठिक आंसर कोडा हबो टिके कहबो समस्ते तो एक नंबर सठिक आंसर जो ऑप्शन नंबर ए कोन हबो ऑप्शन नंबर ए हबो सठिक आंसर तो दुई नंबर बिट को जिबा पले फाइंड द ऑड सीजन एटा देखि परछ ना गॉड इज ग्रेट तो समस्त आंसर करि चलो पिले तो ऑप्शन नंबर ए हबो सठिक आंसर ठीक अछि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा 2 नंबर पिले फाइंड द ऑड सीजन आउट as mentioned in the poem all things bright and beautiful winter summer autumn summer and winter तो 2 नंबर सठिक आंसर कोडा हबो देखि कहलो तो 2 नंबर सठिक आंसर हो जो ऑप्शन नंबर सी के लगी चलो नेक्स्ट आको जिबा क्लास रु अधारु कही जीवनी पिले तुमको रिक्वेस्ट करूची यदि देखिबा नाही स्टार्टिंग रु देखनी किंतु अधारु जीवनी पिले बुझियोछ तो चलो 3 नंबर बिट को जिबा व्हाई डज द ऑथर राइट द हाउस but not a house as described in the story a letter to God it was a particular house found in the entire valley it was the only house found in the entire valley it was Lencho's house found in the entire valley it was the lonely house find in the entire valley तो 3 नंबर सठिक आंसर कोडा हबो तो ऑप्शन नंबर बी हबो तो इट वाज द ओनली हाउस फाइंड इन द एंटायर वैली तो 3 नंबर सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी कोन गिरे ऑप्शन नंबर बी ए पॉइंटटा मने रखिबो ठीक अछि पिले चलो गोटे गोटे लाइक कर दबो समस्त गोटे गोटे लाइक कर दबो पिले हला चैनल को नुआ करके आस्तेले चैनल को सब्सक्राइब करिबा हां चैनल को सब्सक्राइब करिबा केबे भूलिबोनी जतरा प्रत्येक टी नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन तमन को मिल जिवो ठीक अछि ना पिले लास्ट को मु तमन को कहबी पिले जे कार केति की रैंकिंग रहिला बुझौछि की कार केति की रैंकिंग रहिला मु तमन को कहबी फर्स्ट नंबर रैंकिंग रे को मान रहिला सेकंड रे को मान रहिला थर्ड रे को मान रहिला सब सब तमन को कहि देबी ठीक अछि चलो देखो कोन देछि देखो 4 नंबर बिट को जिबा व्हिच स्टेटमेंट जस्टिफाइज लेंचोस डीप फेथ एंड कॉन्फिडेंस हेल्प हिम ओवरकम हिम मिसफॉर्च्यून इन लाइट ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड जल्दी जल्दी को आंसर कोडा हो तो 4 नंबर सठिक आंसर कोडा हो बोली भाबुछ पढ मन ध्यान देगिरी आगो ऑप्शन टा को पढिबा पे चेष्टा करो तापर आंसर करिया पे चेष्टा करिवो 4 नंबर सठिक आंसर कोडा हो को 4 नंबर सठिक आंसर कोडा हो बहुत बढ़िया तो 4 नंबर सठिक आंसर हो जो ऑप्शन नंबर डी कोन गिरे पिला माने ऑप्शन नंबर डी बुझा पड़छि की बहुत बढ़िया तो एटा हबो ऑल एफ द अबव देखो लागी ए ट्रिक टा सबले मन रखो देखो जते बेले कोनोसी क्वेश्चन रे ना नॉन ऑफ द अबव देथिबो ऑल ऑफ दिस देथिबो एई भले ऑप्शन देथिबो ना तमे कोनोसी ऑप्शन को न मारि कि सेही ऑप्शन टा को बाडै देबो काहे कि ना बेले माने सेही ऑप्शन टा होची यूनिक माने कोन अलगा से यूनिक माने बुझी पर जतो पिले सेही ऑप्शन टा ही अलगा सब तो सेहिति पे हम कहउतली जदि एमिति पिला माने देइथिबो बुझी परछ ना जदि एमिति किछि देइथिबो पिले ऑप्शन नॉन ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस ताले पिले तमे सेही गुडा को आंसर मार दबो सेही ऑप्शन ना मार दबो बुझी परला तो चलो नेक्स्ट आको जिबा
तापर देखो पिले कोन देइछि 5 नंबर बिट को जिबार पिले माने व्हाट डज द फ्रेज कोन कहली व्हाट डज द फ्रेज हम्बल ले मीन folk song sweet song ordinary song sad song तो 5 नंबर सठिक आंसर कोड हबरे तो ऑप्शन नंबर सी हे परिबो ऑर्डिनरी सॉन्ग कोन ऑर्डिनरी सॉन्ग ए पॉइंट मन रखिबो ठीक अछि तापर आकु जिबा देखो कोन देइछि 6 नंबर बिट को द एक्सप्रेशन द प्लांटिटिव नंबर फ्लो रिफर्स टू डैश तो कोड हबो स्वीट म्यूजिक सैड म्यूजिक ओल्ड म्यूजिक मॉडर्न म्यूजिक तो 6 नंबर सठिक आंसर कोड हबो तो 6 नंबर सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी सैड म्यूजिक कोन हबो सैड म्यूजिक तो 6 नंबर सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी बुझी परछ कि चलो नेक्स्ट आको जिबा हला 7 नंबर बिट को जिबा आई एम स्टिल पेइंग I am still paying penalty of and condichgre another neglect. What kind of neglect is Gandhiji saying about? His hard देखो कौन देछि his hard कौन देछि handwriting, his non-participation in gymnastics, his negligence in the study, his carelessness in meaning the time. तो 7 नंबर सठिक आंसर कोडा हबो तो ऑप्शन नंबर ए हबो his bad handwriting. कौन कहली his bad handwriting. 8 नंबर क्वेश्चन को जिबा गांधीजी retained the nation Panditji Gandhiji retained the nation that good handwriting was not a necessary part of education until death. He went to England, he realized with his mistake, he repented of his neglect, he saw beautiful handwriting of lawyers and young men in South Africa. 8 नंबर सठिक आंसर कोड हबो तो ऑप्शन नंबर ए हबो he went to England कोन he went to England तमरो मने पड़छि पिले एसएससी रे तमान को गुटे जिंस पढेबा पे जिबि रे पिला आगु को जिबि एसएससी रे गुटे जिंस तो माने पढिबो बहुत शीघ्र पढिबा पे जाउछ अच्छा मते कहलो गांधीजी हमर गोटे दक्षिण अफ्रिका रे गोटे संघ अनुष्ठान गठन करथिले ता ना तमरो मने अछि पिले नाटाल भारतीय कांग्रेस रे पिले नाटाल भारतीय कांग्रेस बुझा पड़छि कि देखो तो कोन सेठी पय से गढी दिले काकि सेठी वर्ण वैषम्य नीति प्रचलन चलतिला माने कोन कि कळा गोरा बाछुतिले सेठीकार लोक बुझी परछ कि सेठी पय सब जिंस करा हितला चलो 9 नंबर बिट को जिबा एट लीस्ट टेक ए सजेशन or two from me said grandfather to dash the zoo authority the first keeper the second keeper the watchman तो 9 नंबर सठिक आंसर कोडा हबो तो 9 नंबर सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर सी the second keeper कोन कहली the second keeper ए पॉइंट मन रखिबो 10 नंबर बिट को जिबार पिले why did grandfather walk briskly out of the zero you कोन दिछि zoo he got angry with the keeper he did not believe the keeper he was late for home he was too much already तो 10 नंबर सठिक आंसर कोडा हबो देखि कहले समस्ते बहुत बढिया 10 नंबर सठिक आंसर को बहुत बढिया 10 नंबर सठिक आंसर कोडा हबो तो ऑप्शन नंबर ए हबो ना he got angry with the keeper कोन कहली तो he got angry with the keeper 11 नंबर बिट को जिबा the girl prefers forest notes to bridal song because the कोन देछि विवाह संगीत नागिरे पिले गोटे अछि क्राडल सॉन्ग नाना बाया गीत नागिरे पिले आ गोटे अछि ब्राइडल सॉन्ग नै चलो ए सब जिंस बाबू इंद्रजीत आस्को मोस्ट वेलकम the music played by the human being is sweeter than nature the traditional music has its कोन देछि ग्रेट tremendous effects on human being the music of nature कोन देछि attract the girl the bridal song is sweeter than the forest music कोड हबो बोली भाबु जकरे the bridal song is sweeter than the forest music बिल्कुल भी नहीं the music of nature attract the girl the traditional music has a tremendous effects of human being the music played by the human being is sweeter than nature तो कोड बोली भाबुछ तो 11 नंबर सी अलगा लागुची पिला माने से झियोटी कोन पय से नेचर आड़ को आगे धसे जाउतला काहेकि ना पिला तो म्यूजिक नेचर अट्रैक्ट करगाल बुझी परछ ना से झियो को कोन करथला अट्रैक्ट करथला बुझी परछ से झियो को अट्रैक्ट करथला बुझी होची चलो को गीतटा से नेचर रो से परिवेश रो जो संगीतटा ना से झियो को अट्रैक्ट करथला बुझी परछ कि चलो नेक्स्ट आ को जिबा लाइक कर दबो 12 नंबर क्वेश्चन को जिबा पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन कोन दिछि एक्सप्रेशन has been used by the daughter in village song to express loss or sorrow पिले तमरो मने पड़छि विश्व सरो दिवस केबे पालन करा जाय वर्ल्ड सरो डे जदि तुमको पचारा गला एसएससी रे पढिबो पिला माने किबा नले जीके पढिबो वर्ल्ड सरो डे केबे पिला माने पालन करा जाय जेते बेले पिले हमर कोन कोन कहली पश्चिम बंग बिहार आ ओडिसा गोटे राज्य हेगिरि थिला तार ना थिला बंगला से राज्यर ना कोन थिला बंगला बंगला सेई बंगला राज्य को कोन कले ना लॉर्ड कर्जन कोन कले ना पिले बंग विभाजन करदेले कहले कि गोटे राज्य को आमे प्रशासनिक सुविधा बा कोनोसी अग्राधिकार देई परिबानी तो सेइतमे ताको आमे कोन करबा भाग भाग कर देबा कोन कर देबा भाग भाग कर देबा बुझि परछ त सेइतमे पिला माने सरोडे पालन करा जाय सेइ दिन लोक माने बहुत कोन ले दुखित होय गेले एठी मु सरो विषय जानि कि ठीक मने पके देले पिले ठीक अछि कि ठीक उसिन आंसर कोन हबो लथर ऑफ द सन विंड ऑफ द डेथ
voices of the fairy folk, notes of the forest। तो कोड हबो तो 12 नंबर सटीक आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी पिले wind of death। कोन wind of death। 13 नंबर क्वेश्चन को जिबा cadnesses कोन दिछि रे cadnesses of sorrow। choose the correct alternative to understand the line phrase। pleasure कोन दिछि pleasure and pain comes periodically, pleasure and pain comes simultaneously, कोन दिछि pleasure and pain comes randomly, pleasure and pain comes spontaneously। तो 13 नंबर सटीक आंसर कोडा परे तो ऑप्शन नंबर ए हबो pleasure and pain। कौन कहली pleasure and pain comes periodically बुझिपारछ ना periodically। तो 13 नंबर सटीक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए ई पॉइंट मने रखियो सर क्या कोट। अच्छा नेक्स्ट विलेज बारे 14 नंबर बिट को which of the following statement shows that the master in the flower school is a hard task master। he makes them kneel down on the veranda, he makes them sit in the room, he makes them stand in a corner, he makes them stand outside। तो 14 नंबर सटीक आंसर कोडा हबरे तो ऑप्शन नंबर सी बिले makes them stand in a corner, he makes in a stand in a corner। এই পয়েন্টটা মনে রাখিবা ঠিক আছে বহুত বঢ়িয়া। তো প্রথম आंसर দেইছি ଆମ দীপ্তি ବହୁତ ବଢିଆ keep it up good job। चलो नेक्स्ट जिबारे कोन देछि हला 15 नंबर क्वेश्चन को जिबा रंगाली बिहू इज सेलिब्रेटेड इन मिड अप्रैल इन आसाम। तो मने बहुत सारा क्वेश्चन तुम मन को पढेथिली आई होप तुम रखिथिबो तापिले जाइथिबो ताले कोन कर ई चैप्टर टा भलो ही पढे देथिली तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया पिला माने पढे नथिले बहुत भलो भाबरे भी बुझेथिली तुम माने बुझि जाइथिबो तुम न रखथो बारंबार से वीडियो गुडा न देखथबो। व्हिच फेस्टिवल इन ओडिशा मार्क्स द स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर। महाविषुव संक्रांति, मकर संक्रांति, अक्षय तृतीया, दशहरा कोडा हबो तो 15 नंबर सटीक आंसर जो ऑप्शन नंबर ए महाविषुव संक्रांति को हमर मिड अप्रैल रे आसाम रे कोन बिहू पर्व रूपे पालन करा जाय बुझि परछ कि कोन गिरे बिहू पर्व रूपे पालन करा जाय। एटा को टेस्ट पेपर नै एटा होची परीक्षा दर्पण बुझि परछ कि चलो नेक्स्ट आको जिबा 16 नंबर यू रीड द टॉपिक और देखिए यू रीड द टॉपिक द फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया योर फ्रेंड हैज फॉर्म्ड एन ऑन दिस ग्रेप प्ले ने endeavor he is instead to take part in dash in Arunachal Pradesh Karachi पूजा वांगाला जीरो फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो 16 नंबर सटीक आंसर कोडा हो देखि कहले जल्दी 16 नंबर सटीक आंसर को तो ऑप्शन नंबर सी हबो पिले जीरो फेस्टिवल कोन जीरो फेस्टिवल। तो 16 नंबर सटीक आंसर होजी सी जीरो फेस्टिवल ठीक अछि ए पॉइंट टा मन रख। चलो नेक्स्ट आको जिबा 17 नंबर बिट को जिबा 17 नंबर बिट कहला व्हाई आर सेवन स्टेट कॉल्ड द लैंड ऑफ सेवन सिस्टर। ने पड़छ ना सातटा राज्य को मिसेगिरी तार ना दे जायछि सेवन सिस्टर सात भौणी बिकॉज़ ऑफ देयर इंटरपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस आदैछि बिकॉज़ ऑफ देयर डिवर्स कल्चर बिकॉज़ ऑफ देयर सम सेम बाउंड्री बिकॉज़ ऑफ देयर रिलीजियस इंपोर्टेंस। तो 17 नंबर सटीक आंसर कोडा होजे तो ऑप्शन नंबर ए बिकॉज़ ऑफ देयर इंटरडिपेंडेंस बुझि पाछ कि बिकॉज़ ऑफ देयर इंटरडिपेंडेंस। 18 नंबर माने कोन कहले इंटरडिपेंडेंस माने बुझि पाछ कि माने जणे राज्य आरो जण आउ गुटे राज्य ऊपर पिला माने गुटे सर परीक्षा तो कोन आसु नै सब आसीबो पिला माने खाली साहित्य आसीबो आसिलानी बोली कोन तुम भाबुछ कि कोड रे आसीबो नि रे को हे जाउछ कि रे भकुड हे जाउछ तुम माने एक्चुअली सब पाठ आसुची पिले तुम माने ही तुम माने कोन मूर्खामी करके आछो पिला माने बुझि पाछ कि सब आछे माने मूर्खामी करछ आउ किछि जिंस नै। चलो नेक्स्ट आकु पिला मान जिबा तो कोड हबो तो 17 नंबर ऑप्शन नंबर ए पिले माने से जो सातटा राज्य ना एकाडे अछंती जणे जणको सहायता रे रहउछंती बुझि पाछ कि इंटरडिपेंडेंस। चलो 18 नंबर क्वेश्चन को पिले जिबारे कोन देछि व्हिच इज राइट अवे व्हिच इज द राइट अवे फॉर अब्लोसिंग द प्रैक्टिस ऑफ बिगिनिंग कंप्लीटली इन आवर कंट्री providing them employment, providing them houses, providing them education, providing them financial help। तो 18 नंबर सटीक आंसर कोडा हबो तो ऑप्शन नंबर ए हबो providing them employment कोन गिरे providing them employment ए पॉइंट मन रखिबो। 19 नंबर बिट को जिबा Luskov owed to Sergey and departed to the gallery। What do you think about Luskov from his behavior? He is humble and polite, he is rude and courageous, आदेछि he is simple and innocent, he is simple and sincere। तो कोडा हबो 19 नंबर सटीक आंसर कहि चलो तो 19 नंबर सटीक आंसर जो ऑप्शन नंबर ए कोन गिरे ऑप्शन नंबर ए ठीक अछि ए पॉइंट टिके मन रखिबो ऑप्शन नंबर ए हबो he is humble and polite कोन गिरे he is humble and polite ठीक अछि। चलो आगु जिबा समस्त पिला माने क्लास को पढा सरे समस्त क्लास को पढा बहुत बहुत इंपोर्टेंट। चलो 20 नंबर क्वेश्चन को जिबा आज स्टार्टेड बाय द बेगर ही वाज सेंट अवे फ्रॉम द रशियन शोर जेछि फॉर डैश drunkenness
swindling and cheating, laziness is the lack of skill। कोउडा पिले मन देख कहले रे से जो माने भिखारी जन को कहला कि मते माने कोन मु गुटे क्लब रे डांस करथि संगीत सिंगर थिली मते सेटु कोन में मार्क दिया गला कोउथि पे पिला माने तो 20 नंबर सठिक आंसर कोडा बरी तो ऑप्शन नंबर ए पिले से कहला कि मु मद्यपान करके ड्रंकनेस हां ना नहीं चला आकु जिबा एगोटा किछ दरकार नहीं देखो while returning from the market, while returning from the market, Samju Sahu brought dash which the kondechigre dash which he then sold in the village. Ghee and sugar, sugar and oil, ghee and salt, salt and oil. ठीक अछि तो कोडा हम देखि बोले भाबुज टिके देख कहलो 23 नंबर सठिक आंसर तो 23 नंबर सठिक आंसर जो ऑप्शन नंबर डी सॉल्ट एंड ऑयल कोन कहली सॉल्ट एंड ऑयल कोन कहली सॉल्ट एंड ऑयल ए पॉइंट मन रखिबो ठीक अछि तापर देखा को जिबा 24 number bit को जिबा which statement gives the clue that the old man was able to walk and physically fit कोडा हबो the old man managed to walk with the help of two crutches the old man was brought before the king walking with one crutch the old man could hardly hear and walk the old man entered workingly easily and without crutches तो कोडा हबो तो 24 नंबर सठिक आंसर अलगा लागुच पिले तो ऑप्शन नंबर डी पिले कोन the old man entered से वृद्धा लोकटी प्रवेश कला এবং ବହୁତ ସହଜରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା କୌଣସି ପ୍ରୋସେସ ଧରିକି ନ ଯିବା ମାନେ ନ ଯାଇକି ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ସବୁଠୁ ପୁଣି ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ 25 ନମ୍ବର ବିଟ୍ କୁ ଯିବା one day some children found a grain of a corn in a ravine find out the most suitable meaning of the underlined word ଏଠି ravine କହିଲେ କଣ ପିଲେ କି କହି ପାରିବ river bank a deep river a deep narrow valley across a very deep river ତ 25 ନମ୍ବର ସଠିक आंसर कोडा बते कहले बहुत बढ़िया समस्त आंसर आसी जाई पिले तो 25 ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी हबो सठिक आंसर पॉइंट मन रखिबो तो ऑप्शन नंबर सी हबो ए वेरी डीप नैरो वैली कोन कहली कि रे ए वेरी डीप नैरो वैली ए पॉइंट मन रखिबो ठीक अछि चलो नेक्स्ट आ को जिबा 26 नंबर which of the following programs has not been suggested by the author the reduce air pollution कोडा हबो देखि कहले 26 नंबर सठिक 26 नंबर सठिक आंसर जो ऑप्शन नंबर ए the government has introduced clear fuel like CNG and LPG ठीक अछि ना बहुत बढ़िया 27 नंबर क्वेश्चन को जिबा गोटे समस्त पर चली गलो रे सब तो कर चली गलो ना ठीक अछि प्लीज सॉरी ठीक बाहर को डाकिले तो के जण चलो 27 नंबर बिट को जिबा हियर विकीज ब्रेन इज डिस्प्लेड एठार जो ई जो विकी रे जो ब्रेन ता दिसुची हाय आई एम विकीज ब्रिलियंट ब्रेन फॉर द कौन दिस विजिटर टू स्टे कौन स्टेयर फॉर द विजिटर्स टू एन्जॉय फॉर द लर्नर्स टू ग्लेन फॉर द लर्नर्स टू गेन नॉलेज देखि कहले पिला माने कोन हबो तो 23 नंबर सठिक आंसर कोडा हबो तो ऑप्शन नंबर डी पिले फॉर द लर्नर्स टू गेन नॉलेज फॉर द लर्नर्स टू गेन नॉलेज ई पॉइंट मन रखिबो ठीक अछि चलो नेक्स्ट आ को जिबा कोन देछि देखो 28 number question को which of the following is not an effect of acid rain which of the following is not an effect of acid rain passes away nutrients from soil traps are raditional that reaches with the earth irritates the sensitive tissues affects stone building and a on monuments तो 28 नंबर सठिक आंसर कोडा हबो तो ऑप्शन नंबर बी हबो सेटा हबो ट्रैप द ट्रेडिशन कोन दिछि ट्रैप द ट्रेडिशन that reaches the earth that the reaches the earth 28 नंबर सठिक आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 28 नंबर सठिक आंसर जो ऑप्शन नंबर बी ए पॉइंट मन रखिबो ठीक अछि चलो आगु को प्ले जिबा देखो कोन दैछि 29 नंबर क्वेश्चन को the brain says I was a part of a living human 2 years ago here the underline phrase refers to देखो एटे जो ई जो फ्रेज ता अछि ना पिला माने लिविंग ह्यूमन से फ्रेज रो पिला माने काहा को रिफर्स करछि विकी विकीस ब्रेन को ना विकीस फादर को ना लोरेन
देखि कहलो तो 29 नंबर सटीक आंसर कोडा हो तो ऑप्शन नंबर ए हबो विक्की को काकू करे विक्की को तो 29 नंबर सटीक आंसर जो ऑप्शन नंबर ए कोन 17 क्वेश्चन कहीं विश्वास होनी 30 नंबर बिट को जिबा स्मोकिंग इन youth कौन कहले रे स्मोकिंग इन इज अ डैश द बॉडी एंड a dash the brain choose the correct pair of word to fill the gaps कोड हबो देख कहले front and sap fronts and clouds front and cloud sap and clouds तो कोड हबो तो 30 नंबर सटीक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी front and clouds कौन कि रे front and clouds ठीक अछि तापर आको जिबा देखो कोन देछि देखो 31 नंबर क्वेश्चन को जिबा तो annual SSC examination dash on 21 first 2020 कौन देछि 2025 तो कोडा हबो देखि कहला will begin is beginning begins has begun तो कोडा हबो 31 नंबर सटीक आंसर की कहि परिबो तो ऑप्शन नंबर सी हबो begins तो 31 नंबर कोडा हबो सी हबो प्ले begins ठीक अछि तापर आकु जिबा 32 नंबर क्वेश्चन को जिबा द क्रिकेट मैच इज ओवर ही डैश होम बाय 5 o'clock will be reaching reaches will reach will have reached कोड हबो 32 नंबर सटीक आंसर को तो 32 नंबर सटीक आंसर जो ऑप्शन नंबर डी will have reached कोन कि रे will have reached ग्रामर पर्सन आसी गला पिला माने 33 नंबर बिट को जिबा pick out the correct grammatical sentence not only the boy but also his friends is guilty the boy or his friends has to repair the chair. Neither the boy nor his friend are playing cricket. Either you or he has taken my pen. तो 33 नंबर सटीक आंसर कोड आबो तो ऑप्शन नंबर डी आबो सटीक आंसर. Either you or he has taken my pen. बुझ पाछ कि चलो तमे नै छ नले से नै थियो मोर पेन नै कि 33 नंबर सटीक आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पिले ए पॉइंट मन रखियो. नंबर डी बुझ कि चलो अब अजित कुमार मलिक तमे घर को जाओ लॉक मारो जी तुम ग्रामर हबो चिंता करो हबो 34 नंबर बिट को जिबा हला वी कॉल गांधी फादर ऑफ द नेशन द पैटर्न ऑफ दिस सेंटेंस तमान को हेदरा पढिथिली पिले हां काहाकू पिला माने सब्जेक्ट कहबा काहाकू ऑब्जेक्ट कहबा काहाकू कॉम्प्लीमेंट कहबा काहाकू एडजंक्ट कहबा सब पढिथिली तम नथिबो ना नाही देखो वी देखो वी कॉल गांधी फादर ऑफ द नेशन वी कॉल गांधी फादर ऑफ द नेशन एठारे से जो सेंटेंस पैटर्न टा कोन अछि बोली पचाछि सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो कोड हबो तो 34 नंबर सटीक आंसर कोड हबो तो ऑप्शन नंबर डी प्ले एस वी ओ सी कोन गिरे एस वी ओ सी ठीक अछि वी कॉल गांधी हमें काहा को गांधी डाको फादर ऑफ द नेशन बुझी पाछ ना चलो नेक्स्ट को जिबा प्ले माने 29 नंबर क्वेश्चन को जिबा द सब्जेक्ट कहला द सब्जेक्ट टीचर इन एडिशन A1 aspirants has attend to कौन दिस गिरे पिला माने रिमेडियल क्लास ठीक अछि इज हैज हैव आर तो कोड हबो 35 नंबर सटीक आंसर कोड हबो तो ऑप्शन नंबर बी हबो हैज हबो से तुमको पढैतिली पिले या पूर्वरु तुम मानको पढैतिली चलो कौन कहू रे पिले सब बेले गोटे जा 35 नंबर आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स कौन कहला आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स बट नॉन ऑफ देम दिस अटेंड माय बर्थडे पार्टी हैज नॉट हैव नॉट हैज हैव तो 36 नंबर सटीक आंसर कोड हबो तो ऑप्शन नंबर सी पिले हैज हबो कौन हबो हैज तब नेक्स्ट दिबा आई डोंट नोटिस देम dash down the tips I don't notice them dash down the tips note noted आज कौन दीजिए was nothing to note तो कोड हबो 37 नंबर सटीक आंसर को 37 नंबर सटीक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए पॉइंट मन रखिबो ठीक अछि चलो नेक्स्ट को जियो
unless you write in good handwriting, you yes good marks, not get, won't get, और दिस बिला will get, और दिस did not get। तो कोड हबो 38 नंबर सठिक आंसर को ऑप्शन नंबर बी हबो, ऑप्शन नंबर बी हबो 38 नंबर सठिक आंसर, 38 नंबर बी हबो। ठीक अछि तापर आकु तापर देछि देखो 39 नंबर क्वेश्चन को प्ले देखो, इट इज सेड दैट इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंटिव, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, प्रिवेंट। तो कोड हबो 39 नंबर सठिक आंसर पिले तो ऑप्शन नंबर बी हबो रे प्रिवेंशन। कोन कहली रे प्रिवेंशन। ठीक अछि बहुत बड़े ई पॉइंट टा ठीक मने रखियो। ठीक अछि प्रिवेंशन। तापर आकु जिबा 40 नंबर क्वेश्चन को पिक आउट द करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस, यू आर मेड टू स्टैंड अप, वी आर मेड टू स्टैंड अप, यू हैव मेड स्टैंड आंसर कोड हबो 40 नंबर सठिक आंसर को এটা হবে অপশন নম্বর এ উই ওয়ার মেড টু স্ট্যান্ড আপ, উই ওয়ার মেড টু স্ট্যান্ড আপ এই পয়েন্টটা মনে রাখিব, উই ওয়ার মেড টু স্ট্যান্ড আপ। ঠিক আছে তারপর দেখা আঁকু ଯିବା, তারপর আঁকু ଯିବା দেখো কোন ଦେଇଛି 41 नंबर द एग डैश इफ, देखिଛ ना द एग डैश इफ सी हैड नॉट ड्रॉप्ड इट। भाब टिके कोन लागिବ तुम कहबो सर आपण लगे दउछन्ती ग्रामर टिके भाब, ग्रामर तो टेंस पिले तुम तो पढिथिबो ना पिले टाइम एंड टेंस। देखो कोन ଦେଇଛି देखो हला would not break, would not have broken, will not break, will not be broken। जदि फास्ट ऑप्शन चेक करिया पिले तो एग 41 नंबर सठिक आंसर कोन हबो देखि, तो ऑप्शन नंबर बी चेक करिया would not have broken, the egg would not have been कौन देछि broken if she had not dropped it। तो ऑप्शन नंबर बी हबो। 42 नंबर क्वेश्चन जिबा इट इज टाइम टू रिंग द बेल, इट कैन बी पैसिव एज। कि कहले पिला माने एई सेंटेंस ता तुमको गुटे देछि एक्टिव सेंटेंस रे, तुमको से पचाछि ताको पैसिव सेंटेंस करो बोली। पैसिव एक्टिव केमति करा जाय जानिछ तो द बेल विल बी रन कौन देछि रे रंग इन टाइम, आ देछि पिले इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, इट इज टाइम टू द बेल टू रिंग, इट इज टाइम द बेल कौन बिंग रंग। तो 42 नंबर सठिक आंसर कोडा बरे तो ऑप्शन नंबर सी हबो इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। ठीक अछि 43 नंबर बिट को जिबा देखो कोन देछि पीपल सेड दैट ही वाज ए सिंसियर टीचर। ठीक अछि it can be changed into passive voice as he said that he was a sincere teacher, he is said to be han कोन देछि he is said to be have been a sincere teacher, he was said to be said to have been a sincere teacher, he was said to be a sincere teacher। तो 43 नंबर सठिक आंसर कोड हबो तो ऑप्शन नंबर सी हबो he was said to have been a sincere teacher। देखिछो ना तो 43 नंबर सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 44 को जिबा मिता said let's play cricket tomorrow, मिता said let's play cricket tomorrow। ठीक আছে it can be changed into reported speech यानी indirect speech पचाछि। ঠিক আছে Mita suggested they are playing cricket the next match, Mita suggested them to play cricket the next day, Mita planned to कौन ଦେଇଛି Mita planned to play cricket the next day, Mita said that they would play cricket the next day। 44 नंबर सटीक आंसर कोड हबो तो ऑप्शन नंबर ए हबो Mita suggested they are playing cricket the next day। तो 44 नंबर सटीक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। करे पिले गोटे छुआ आसिला जोटी आछि इट्स खुशबू आसिके कहउछन्ती कि सेटा फेक क्वेश्चन तमे जो कहलो फेक क्वेश्चन ठीक अछि भलो कहलो कि तमन ओरिजिनल क्वेश्चन नै आछि कि तमन को मान को पाई मु एठी ओरिजिनल क्वेश्चन आनुछि कि पिले तमन को पाई ओरिजिनल क्वेश्चन एठी आनुछि बोली तमन को कहिछि कि तो कमेंट सेक्शन जिंसो कहबा मतलब से कहबो कि पिले कमेंट सेक्शन रे ई सब कहबा मतलब कोन को पिले तो कोन ମୁଁ ତ ରିଏଲ ବୋଲି ତମକୁ କହିନି ପିଲେ ପରୀକ୍ଷା ତ ପଣ କରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ପିଲେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯଦି ତମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। 44 नंबर सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 45 मिनट को जिबा द बिलीफ कोन देछि रे द बिलीफ दैट फेट रूल्स ठीक अछि आवर लाइफ इज वेरी कॉमन, द अंडरलाइन क्लाउज as an object of a traditional verb, an object of an positions, the complement of a verb, opposition कौन दीजिए opposition to a noun phrase। तो 44 45 नंबर सटीक आंसर कोड आवर तो ऑप्शन नंबर डी
in opposition to noun phrase. अच्छा in opposition to a noun phrase. तो 45 नंबर सटीक आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नंबर डी तापर देखा आखु देखो कौन देछि रे पिले हला a teachers teaching should not be difficult to understand. The underlined word can be replaced by देखो ए पॉइंट टी मन रखो a teacher's teaching should not be difficult to understand अच्छा कि देखो the underlined word can be replaced by understand माने बुझा बुझिबा अच्छा कि make of make up make out make over पिले एटा कोन पडिछि फ्रेजाल वर्ब पडिछि बुझि पाछ कि ए टीचर्स टीचिंग should not be difficult to understand जने शिक्षकर पढेबा शैली बुझिबा केबे कष्टकर हबा कथा नुह बुझि पाइलो ना एटा जो बुझिबा अर्थ बदल रे आमे कोन लगै परिबा फ्रेजाल वर्ब मेक ऑफ र अर्थ कोन मेक आउट र अर्थ कोन मेक ऑफ र अर्थ कोन मेक ओवर र अर्थ कोन यार जदि सठिक जिंस जानिया पे चाहौ छना पिला माने हम चैनल रे वीडियो अछि फ्रेजाल वर्ब रो वीडियो करछि तमे जानि परिबो तो 46 नंबर सठिक आंसर कोडा बरे तो ऑप्शन नंबर सी पिले मेक आउट कोन मेक आउट चलो 47 नंबर बिट को जिबा देयर इज कोन दिछि देयर इज स्टिल नो क्योर एस एड्स ऑफ फॉर अबाउट विथ तो कोडा हो 47 नंबर सठिक आंसर को 47 नंबर सठिक आंसर जो ऑप्शन नंबर बी पिले फॉर कोन कहली फॉर ए पॉइंट मन रखि कहली फॉर पिले तापर देखा आखु जिबा हां सब दिन क्लास करबी और चल जिबा he has resigned from his job which is surprising the underlying clause is dash noun clause adverb clause defining relative clause non defining relative clause तो 48 नंबर सठिक आंसर कोडा हबो तो ऑप्शन नंबर डी हबो non defining relative clause ठीक अछि 49 नंबर क्वेश्चन को जिबा राजू ran so fast that he won the match the subordinate clause in this sentence is an dash clause adverb clause of the region adverb clause of propose adverb clause of result adverb clause of concession तो 49 नंबर सठिक आंसर कोडा हबो तो ऑप्शन नंबर सी adverb clause of result adverb clause of result नेक्स्ट बा लास्ट क्वेश्चन पिले I saw her cross the road the function of the underlined word non finite verb is subject object complement adjunct कोडा हबो 50 नंबर क्रॉस क्रॉस बदल पिला माने I saw her cross the road तांको देखिली से रोड क्रॉस करिवार द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन नाम नॉन फाइनाइट वर्ब इज डैश 50 नंबर सटीक आंसर जो ऑप्शन नंबर सी कॉम्प्लीमेंट रे कॉम्प्लीमेंट ठीक अछि ए पॉइंट मन रखि तो 50 नंबर सटीक आंसर जो ऑप्शन नंबर सी मानकर आंसर आसी गला रे पिले बहुत बढ़िया देखो नेक्स्ट बा पिले माने यार लॉन्ग क्वेश्चन गुडा का जे मु रात्री प्रिपेयर कर देबी ठीक अछि पिले एटा मॉडल पेपर सेट कोड सेट जानि नि पिले चलो देखो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन जिबारे 1 नंबर क्वेश्चन को व्हाट इज द थीम कोन दिछि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कहली पिले व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल
would have option number A ଦେଇଛି about our gratitude to God for his wonderful creation, about beautiful plants and animals, about beautiful birds and flowers, about natural beauty। ତ କୋଉଟା ହବ ଏକ ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର କହିବ ସମସ୍ତେ। ଏକ ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର କୁହ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହିବ, ଲେଟ୍ କରିବନି ହେଲା। ଏକ ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର କୁହ। ଏକ ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ, about our gratitude to God for his wonderful creation। ଠିକ ଅଛି ନା, ତ ଏକ ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ବିଟ୍ କୁ ପିଲେ ଯିବାରେ ଦେଖ, what is the rhyming, କଣ କହିଲି କି, what is the rhyming scheme of the poem all things bright and beautiful in the first stanza। ଦେଖ, what is the rhyme scheme of the poem all things bright and beautiful in the first stanza। କହିଲେ କୋଉଟା ହବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ରାଇମିଂ ଅନୁସାରେ କୁହ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର କୁହ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର କୁହ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର କୁହ। ରିଏଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଦଉନି ରେ, ରିଏଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିବ ବୋର୍ଡ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିବ, ଯାଅ ଆଣି ପକଉ, କଥା ନାହିଁ। କଣ କରିବ କହିଲେ ବାବୁ, କିଏ କହିଲା କି, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଗୋଟେ ମିନିଟ, ରିଏଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଁ ହଁ, କଣ କରିବ ନା ପିଲାମାନେ, ଯୋଉମାନେ ରିଏଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଖୋଜୁଛ ବୋର୍ଡ ପେପର କୁ ଯିବ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ କୁ କିଛି ଦେଇଦବ, ନିଅ ଦିଅ, ହେଲା କି ନାଇଁ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ ଟିକୁ ଦେଖ, ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ କୁ ଦେଖ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ କିରେ ପିଲାମାନେ, ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ଏ ବି ଏ ବି, କଣ କିରେ ପିଲେ, ଏ ବି ଏ ବି। ତିନି ନମ୍ବର ବିଟ୍ କୁ ଯିବା, what matter could ଗାନ୍ଧୀजी to scheme, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, what matter could ଗାନ୍ଧୀजी to shame kindness of Sanskrit teacher, kindness of a person teacher, kindness of the headmaster, kindness of his father। ତ ତିନି ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ, ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, kindness of Sanskrit teacher। କଣ କହିଲି, kindness of a Sanskrit teacher। ଚାରି ନମ୍ବର ବିଟ୍ କୁ ଯିବା, according to Krishna Shankar Pandya, according to Krishna Shankar Pandya, as a Vaishnava learning, as a Vaishnava learning of dash should not be ignored, geography, gymnastics, Sanskrit, Persian। तो 4 नंबर सटीक आंसर कोड हबो, 4 नंबर सटीक आंसर को, चारि नंबर सटीक आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पिला माने संस्कृत। कोन कहली संस्कृत। 5 नंबर बिट को जिबा, गॉड सेंड मी द रेस्ट सिन आई नीड इट वेरी मच। कोट लेंचो हियर द अंडरलाइन वर्ड रेस्ट रिफर टू डैश पेसो 30 40 70 35। देखि कहले रे एटा तमर मने पड़छि ना पिला माने ए लेटर टू गॉड चैप्टर पिला माने आछि। तो 4 नंबर सटीक आंसर हो ऑप्शन नंबर 4 नंबर सटीक आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पिले, ऑप्शन नंबर सी। ए पॉइंटटा मन रखियो, बुझी परछ कि। चल आको जिबा, ऑप्शन नंबर सी हबो 70। नेक्स्ट जिबा 6 नंबर बिट को जिबा, देखो 4 ना 5 रे 5, 6 नंबर बिट को जिबा, व्हाट थॉट रिफ्लेक्ट्स लेंचो कॉन्फिडेंस गॉड व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos। the help of God, no one dies of hunger, God could not have made mistake, God if you don't help me and my family I will go hungry this year। तो 6 नंबर सटीक आंसर कोडा बरे, 6 नंबर सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, God could not have made a mistake। कौन कहली, God could not have made a mistake। तो 7 नंबर बिट को जिबा पिला माने कोन देछि देखो, grandfather used to stop Timothy Grohl by dash। ठीक আছে, stroking his forehead, smacking him across the mouth, patting his back, कौन देछि रे, ticking his ears। तो 7 नंबर सटीक आंसर कोडा हबो, 7 नंबर सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्मैकिंग देछि, स्मैकिंग हिम अक्रॉस द माउथ, स्मैकिंग हिम अक्रॉस द माउथ। ए पॉइंटटा मन रखिबो, बुझि होछि कि। चलो नेक्स्ट आ आंसर कर दोछ ना प्लीज, आंसर कर दोछ ना, बहुत खुशी लागला तमन अरे पिला, बहुत खुशी लागला। 8 नंबर बिट को जिबा, which situation finally complete, बुझि पारछ ना, the situation finally complete grandfather to transfer Timothy to a Jew grew steadily less friendly, he tried to steal away to talk a cat or pet कौन Pekins, he entered the poultry house and killed the birds, began to stalk Mohammed, कौन देछि पिला माने मोहम्मद with a villainous look।
तो 8 नंबर बिट को जिबार पिले करबा ए 9 टा पर क्लास कल होला बुझी नहीं केन किछ एबे कर दउछ एटा सर आसीबनी 8 नंबर बिट को पिला माने जिबा तो कोन होची देखो पिले 8 नंबर बिट होची ऑप्शन नंबर डी पिला माने ही बिगन टू स्टॉक मोहम्मद विथ ए विलेनियस लुक बुझी परछ कि ऑप्शन नंबर डी हबो सटीक आंसर ठीक अछि तापर देखा आकु 9 नंबर बिट को जिबा व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम कोन कहला व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम ठीक अछि द सॉलिटरी रिपर हैप्पी सैड इमोशनल कोन दिछि सूदिंग शूटिंग कोडा हबो 9 नंबर सटीक आंसर को तो 9 नंबर सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी पिले सैड सैड बुझा पड़छि कि 10 नंबर बिट को पिले जिबारे द एक्सप्रेशन टेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज इन द सॉलिटरी रिफर्स टू डेस अरेबियन सैंड्स ठीक अछि द डीप वैली माउंटेन रीजन्स कोन दिछि रे फारेस्ट कोन दिछि हर्बी डेस तो 10 नंबर सटीक आंसर को ऑप्शन नंबर डी हबो पर डी हबो चलो 11 नंबर बिट को जिबा सपोज we are a flower in the poem the flower school what message would you give to the world ठीक अछि beauty and happiness anger and frustration pain and pleasure कोन दिछि sorrows and suffering 11 नंबर सटीक आंसर को 11 नंबर सटीक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए ब्यूटी एंड हैप्पीनेस कहली ब्यूटी एंड हैप्पीनेस तो 11 नंबर सटीक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पर ए हबो सटीक आंसर ठीक अछि तापर आकु तापर देछि 12 नंबर कोन देछि द फ्लावर वी आर हाइडिंग अंडरग्राउंड बिफोर दे ब्लूम दैट टीचेस अस द वैल्यू ऑफ डेज लव पेशेंस कोन देछि रे ट्रथफुलनेस आ देछि सैक्रिफाइस 12 नंबर सटीक आंसर कोडा हबो ऑप्शन नंबर बी पेशेंस बुझा पड़छि कि पेशेंस पेशेंस 13 नंबर क्वेश्चन को जिबा बिहू ए जियोस कोन करे बिहू ए जियोस डांस ऑफ आसाम इज मार्क विथ डैश brisk step and a hand movement, brisk step and a belly movement, gentle step and a body movement, gentle step and eyes movement. 13 नंबर सटीक आंसर कोडा हबो तो 13 नंबर सटीक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए brisk step and a hand movement खाली brisk step and a hand movement तो 13 नंबर सटीक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए 14 नंबर बिट को जिबा people of Assam are blessed with the mighty river people of Assam are blessed with the mighty river Ganga यमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्र तो 14 नंबर सटीक आंसर कोडा हबो तो ऑप्शन नंबर डी हबो ब्रह्मपुत्र कोन कहली ब्रह्मपुत्र 14 नंबर सटीक आंसर हो ऑप्शन नंबर डी ठीक अछि तापर आखु जी 15 नंबर क्वेश्चन को जिबा द 100 ड्रम फेस्टिवल तमरो मने पड़छि पिले एमती गुटे जिंस अछि 100 ड्रम फेस्टिवल बुझियो इज सेलिब्रेटेड बाय द गारोस इन द विलेजेस ऑफ डैश मेघालय त्रिपुरा मणिपुर आसाम तो 15 नंबर सटीक आंसर कोडा हबो तो ऑप्शन नंबर ए हबो मेघालय कोन गिरे मेघालय 16 नंबर बिट को जिबा द phrases bridal song and cradle song suggest that dash life is full of pleasure life is full of pain and suffering life is filled with opportunities life is filled with costumes and beliefs तो कोड हबो 16 नंबर सटीक आंसर को 16 नंबर सटीक आंसर जो ऑप्शन नंबर ए लाइफ इज फुल ऑफ प्लेजर लाइफ इज फुल ऑफ प्लेजर ए पॉइंट मन रखियो चलो 17 नंबर बिट को जिबा ए mother science lullabies to make her baby go to sleep here the word lullabies refers to death bridal song cradle song folk song devotional song तो 17 नंबर सटीक आंसर कोडा हबो तो ऑप्शन नंबर बी क्रैडल संग नाना बाय गीत ना कि तो 17 नंबर सटीक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 17 नंबर सटीक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी तो आंसर आसी जाउची बहुत बढ़िया सुनी चली तो आंसर देखि खुशी हो गली बिले चलो नेक्स्ट आ 18 नंबर क्वेश्चन को जिबा काइंड सर हैव पिटी टर्न योर अटेंशन टू द poor hungry man the statement is said by dash the advocate driver the cook the beggar तो कोड हबो देखि कहले सटीक आंसर
को 18 नंबर सटीक आंसर को नंबर डी हबो पिले ना द बेगर कोन द बेगर 19 नंबर क्वेश्चन को जिबा सर्गेई द एडवोकेट ऑफर्ड सम अदर डिनर एम्प्लॉयमेंट टू द बेगर हियर द अंडरलाइन फ्रेज मींस दिस वर्क ऑफ ए कॉपिंग द वर्क ऑफ ए कुक द जॉब ऑफ ए कंदी जी वैगनर जॉब ऑफ ए वुड कटर तो 19 नंबर सटीक आंसर कोडा हबो तो ऑप्शन नंबर ए हबरे द वर्क ऑफ ए कॉपिंग द वर्क ऑफ ए कॉपिंग 20 नंबर क्वेश्चन को जिबा उल्गा the cook proved that a drunkard like to loss cup can be changed by dash money and gifts noble deeds and awards holding and beating giving him कौन देची menial work तो 20 नंबर सटीक आंसर कोडा हबरे ऑप्शन नंबर बी हबो noble deeds and awards noble deeds and awards 21 नंबर क्वेश्चन को जिबा which of the following is not a major cause of air pollution which of the following not a major cause of air pollution automobile exhaust emission of industrial smoke and ash burning of fossil fuels acid rain तो कोडा हबो 21 नंबर सटीक आंसर कोडा हबो तो ऑप्शन नंबर डी हबो एसिड रेन कोन एसिड रेन तो 21 नंबर सटीक आंसर एसिड 22 नंबर क्वेश्चन को जिबा देखो कोन देची why is the Bhopal incident called a tragic industrial कोन देची accidents because एटा कहलो पले 22 नंबर सटीक आंसर को 22 नंबर सटीक आंसर को ऑप्शन पढ़ो तापर कहया को चेष्टा कर पढ़ी की को 22 नंबर सटीक 22 नंबर सटीक आंसर को पिला माने चैनल को जो माने नुआ करके आछो ना चैनल को सब्सक्राइब कर दियो पाखर थिया बेल आइकन को हिट कर दियो जा द्वारा प्रत्येक टी नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपको मिल जिवो बुझी परछ कि समस्त को मिल जिवो चलो तो कोड हबो 22 नंबर सटीक आंसर को ऑप्शन नंबर बी हबो पिले बिकॉज़ ए डेडली गैस escaped into the atmosphere and killed 4000 residents तापर देखा खुजबे 23 नंबर क्वेश्चन को जिबा व्हाट व्हाट इज द मेसेज conveyed by the poet through the poem from the formalin jar देखि कहले यार ऑप्शन कोडा हबो को 23 नंबर सटीक आंसर को ऑप्शन नंबर ए हे पारे एज फेम ब्यूटी और विजडम becomes meaningless unless a person is careful about the safety चलो 24 नंबर बिट को जिबा व्हाट इज द इंसल्टिंग टू बिकीज ब्रेन sitting in the formalin jar people starting at it again and again being called a specimen having no stroke box or trimmer कोड हबो 24 नंबर सटीक आंसर 24 नंबर सटीक आंसर जो ऑप्शन नंबर सी being called a specimen कोन गिरे being called a specimen 25 नंबर क्वेश्चन को जिबा what should be avoid कहली what should be avoid in our leisure hours reading interesting books mere idling spending time with good companionship आदि जे मेकिंग इंटरेस्टिंग हॉबीज तो 25 नंबर सटीक आंसर होची कोडा गिरे तो ऑप्शन नंबर बी मियर आइडलिंग कोन देजी मियर आइडलिंग ए पॉइंट मन रखियो 25 नंबर सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी मियर आइडलिंग तापर जे 26 नंबर बिट को व्हिच डेप्थ देजी व्हिच डेप्थ प्रूव्ड टू रिच फॉर टिमोथी कॉड लिवर ऑयल रॉ मटन मिल्क पिजियंस एंड रैबिट्स 26 नंबर सटीक आंसर कोडा हबो तो 26 नंबर सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी मिल्क पिले मिल्क मिल्क पॉइंट मन रखिबो ऑप्शन नंबर सी मिल्क हबो पिले ऑप्शन नंबर सी ठीक अछि समस्त आंसर आसी गला आंसर आसुची तापर आको जिबा 27 नंबर बिट को अकॉर्डिंग टू लॉर्ड स्ट्रेस प्रेसी सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन डैश गुड हेल्थ गुड कैरेक्टर लेजर आवर्स साउंड माइंड तो कोड हबो 27 नंबर सटीक आंसर 27 नंबर सटीक आंसर जो ऑप्शन नंबर ए गुड हेल्थ कोन गुड हेल्थ 28 नंबर को जिबा मनी डज नॉट ग्रो ऑन ए ट्री हियर हु सेड दिस स्टेटमेंट वन शेख हु चौधरी समझू साहू ओल्ड 28 नंबर सटीक आंसर को 28 नंबर सटीक आंसर जो ऑप्शन नंबर ए जुम्मन शेख कोन कहली जुम्मन शेख तो 28 नंबर सटीक आंसर जो ऑप्शन नंबर ए समस्त आंसर आसी जाइछि रे प्रथम आंसर दैछि दीप्ति बहुत बढ़िया कीप इट अप गुड जॉब तापर आको जिबा 29 नंबर बिट को जिबा द वाइज मैन वेंट टू द किंग एंड सेड इट इज ए ग्रेन ऑफ अ क्रॉन व्हेन डैश ट्रैवलर सोल्ड द थिंग टू द किंग द ओल्ड मैन रिकॉग्नाइज्ड द थिंग द वाइज मैन कंदिछि pondered and recognized the thing a hen pecked at the thing and made a hole in it
29 नंबर सटीक आंसर कोडा हबो तो ऑप्शन नंबर डी ए hen pecked at the thing ठीक है and made a hole in it 30 नंबर बिट को जिबा what practical solution can people take to reduce air pollution in their daily lives depending more on private vehicle rather than public transport burning more sulfur coal and oil others will coal and oil using vehicle equipped with a harmless device engaging in deforestation and making कौन देछि urbanization तो 30 नंबर सटीक आंसर कोडा हबो तो ऑप्शन नंबर सी हे परिबो यूजिंग व्हीकल इक्विप्ड विथ हार्मलेस डिवाइसेस ठीक अछि चलो नेक्स्ट आको जिबा आ किछ नै 31 नंबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम has a lot of books wrote was writing has written had written 31 नंबर सटीक आंसर कोडा हबो तो ऑप्शन नंबर ए रोट ठीक अछि चल आको जिबा 32 नंबर द गर्ल डेस मोर एंड मोर ब्यूटीफुल डे बाय डे गर्ल डेस मोर एंड मोर ब्यूटीफुल डे बाय डे लुक्स इज लुकिंग has looked से कहउछन्ती से झियोटा दिनकु दिन सुंदर हवा पय जाउछि अति सुंदरी हवा पय जाउछि तो 32 नंबर सटीक आंसर कोडा हबरे तो ऑप्शन नंबर बी हबो is looking the girl is looking more and more beautiful day by day बुझि पाछ कि पॉइंट चलो नेक्स्ट आको जिबा 33 नंबर बिट को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग imperative sentence expect suggestions respect your elders please have another cup of the tea let's go on exertion sort the indoors कोडा पिला माने एटु बुझौछि तमनको imperative sentence माने आदेश सूचक respect your elder please have another cup of the tea आदेश सूचक ना लेट्स गो ना एग्जॉस्टन कोडा हबो शट द विंडो कोडा हबो कोडा आदेश बेले लागुछि 33 नंबर सटीक आंसर कहले ऑप्शन नंबर सी लेट्स गो ऑन एन एग्जॉस्टन नाकी एक्सरशन तो 33 नंबर सी हबो पिले 33 नंबर सी हबो सटीक आंसर सी हबो ना भाग्यलक्ष्मी दास हां दे देबी मु ग्रुप रे दे देबी यार पीडीएफ पिले तमे समस्त नै कि देखि दबो ठीक अछि किछि कथा नै 34 नंबर क्वेश्चन को जिबा द बॉय डिड नॉट गो टू स्कूल द बॉय डिड नॉट गो टू स्कूल डैश ही वाज इल सो फॉर स्टिल एंड तो 34 नंबर सटीक आंसर कोडा हबो देखि कहला ऑप्शन नंबर बी पिले फॉर ठीक अछि 35 नंबर क्वेश्चन को जिबा द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स वाचिंग द क्रिकेट मैच डैश 50 आर 50 इज 50 हैज 50 हैव 50 मने पडुछि ना तमानको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढैतिली गत क्लास रे ठीक अछि माने जानि थिबो पिले को कोडा हबो 35 नंबर सटीक आंसर कोडा हबो को तो ऑप्शन नंबर बी इज 50 कोन करे इज 50 36 नंबर what the student are studying these days that's very important for their examination is are have had 36 नंबर सटीक आंसर कोडा हबो तो ऑप्शन नंबर ए हबो इज बुझा पड़ला कि इज हबो रे 35 नंबर बिट को जिबा I still remember that puri with my father last year did visiting to visit visited तो 37 नंबर सटीक आंसर कोडा हबो तो ऑप्शन नंबर बी हबो visiting कोन visiting 38 नंबर बिट को जिबा द कैंडिडेट्स should reach the examination hall dash at a time in time by time for time 38 नंबर सटीक आंसर कोडा हबो तो ऑप्शन नंबर बी इन टाइम कोन कहली इन टाइम तो 38 नंबर सटीक आंसर हो बी इन टाइम ए पॉइंट मन रखिबो ठीक अछि तापर आकु 49 नंबर बिट को जुआर पिले have the factory workers dash the strike dash called on called out called in देखिए एटा भाबो टिके have the factory workers पिले जदि हम एटी कॉल्ड लगेबा एटी ऑफ लगेबा वर्कर्स कॉल्ड द स्ट्राइक ऑफ तो ऑप्शन नंबर डी हबो चलो 40 नंबर बिट जिबा pick out the correct grammatical sentence having a defining relative clause a doctor who treats the patient is a person a doctor who is the patient is a person. A doctor is a person who treats the patients. A doctor was a person who treats the patient. को 40 नंबर बिट कोड हबो सी ए डॉक्टर इज ए पर्सन हु ट्रीट द पेशेंट डॉक्टर जने व्यक्ति जिए पेशेंट मानकर कोन करंती कि रे पिले ट्रीट करंती तांको चिकित्सा करंती ना नै 40 नंबर सी हबो सटीक आंसर पुछि कि 40 नंबर सी हबो बहुत बढ़िया समस्तकर आंसर आसी जाउछि रे अच्छी समझ करि पारछो बहुत खुशी लागुଛି चलो नेक्स्ट आको जिबा 41 नंबर बिट पिक आउट द सेंटेंस विथ ए कंडीशनल क्लाउज को तो एटा 41 नंबर ता कोडा हबो पढ़ी की को इट्स प्रणाम प्रणाम
को 41 नंबर सटीक आंसर को 41 नंबर सटीक आंसर को तो ऑप्शन नंबर सी पिले वेयर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। चलो 42 नंबर माय डॉग इज बीइंग टेकन टू द गार्डन सेंटेंस इज इन डैश। देखो माय डॉग इज बीइंग टेकन टू गार्डन द सेंटेंस इज कौन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहलो रे तमर मने पड़छि पिले देखो एटा कोन लागि छि माय डॉग हला पिला माने सब्जेक्ट सब्जेक्ट पर देखो पिला माने कोन लागि छि रे इज am are कि नहीं प्लस ing फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब पिला माने हला देखो लागि छि कि लागि नहीं मेन वर्ब लागि छि ता सहित पिला माने कोन लागि छि रे प्लस v3 माने एटा कोन हबो को सेंटेंस रे रहइबो तो 42 नंबर सटीक आंसर जो ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नागि रे चलो नेक्स्ट को जिबा देखो देछि 43 नंबर pick out the correct grammatical sentence pick out the correct grammatical sentence he wanted to know if it is raining he wanted to know if it is was raining he asked whether was it raining asked whether it is raining तो 43 नंबर सटीक आंसर को 43 नंबर सटीक आंसर को 43 नंबर सटीक आंसर को ऑप्शन नंबर बी हबो ना he wanted to know if it was raining 44 नंबर बिट को जिबा my friend visits me every year dash the new year on at by in तो 44 नंबर सटीक आंसर जो ऑप्शन नंबर बी at the new year बुझा पड़छि कि चला 45 बा there are many people that lives have been spoiled by this war which whose that who तो 45 नंबर सटीक आंसर कोडा बरी तो ऑप्शन नंबर बी whose पिला माने कोन गिरे whose 40 नंबर बिट को जिबा my shirt need ironing देखि पाछो ना my shirt it needs ironing ता पिला माने ironing हबो ironing नै ironing the passive sentence of the sentence above the dash my shirt is needed ironing my shirt needs to be ironed my shirt needed to be ironed my shirt is to need ironing तो कोडा हबो 40 नंबर सटीक आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी my shirt needs to be ironed ठीक अछि चलो 47 नंबर जिबा he said to me did you know him it can be changed into reported speech reported माने indirect speech को करो he said to me did you know him ए कोन हबो indirect speech रे परिणत कर 47 नंबर सटीक आंसर हो जो ऑप्शन नंबर सी he asked me if I had no asked me if I had 48 नंबर क्वेश्चन को जिबा पले but though I was none of the words of having neglected exercise I am still paying the penalty of the another neglect the underline word can be replaced by एटे जो underline word अछि पिला माने none of the words कोन गिरे none of the words 48 तार रिप्लेस कोन कर परिबो 48 नंबर सटीक आंसर को को तो 48 नंबर सटीक आंसर कोडा बरे ऑप्शन नंबर सी हबो नॉट अफेक्टेड कोन कहली नॉट अफेक्टेड 49 नंबर द मैनेजर कुड नॉट मैनेज हिज वर्क डैश हिज वर्क चेंज द अंडरलाइन वर्ड इनटू ए सिंगल वर्ड अनमैनेज्ड मिसमैनेज्ड मैनेज्ड देछि इल मैनेज्ड तो कोडा हबो 49 नंबर सटीक आंसर कहले तो ऑप्शन नंबर बी मिसमैनेज्ड कोन मिसमैनेज्ड लास्ट क्वेश्चन पिला माने आजिरो क्लास रो गांधी वाज बैड डैश हैंडराइटिंग गांधी वाज बैड डैश हैंडराइटिंग एट टू इन on तो 50 नंबर सटीक आंसर कोडा हबरे पिले तो 50 नंबर सटीक आंसर जो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी हबो सटीक आंसर पिले हबो इन पिले ठीक अछि इन आई होप पिला माने तमन को पय मु दीटा सेट करि देली पिले ठीक अछि ना दीटा सेट प्रैक्टिस करि देली तो माने समस्त भलो पिला माने मार्क रखिलो रे देखो पिले हमर इवनिंग रे श्रीधर सर बसंत सर को क्लास अछि सो दैट मु करि परिबिनी तो माने करो क्लास ठीक अछि यदि हबो तमन को पिला माने कौन 9टा राति करवा जदि भल लगे करवा मो तो व्यस्तता जो कर पारिनी भाबुची जदि हम आम मर्निंग रे क्लास कर ठीक अच्छे मर्निंग रे समस्त पळै आसीबो हला ए दिन मर्निंग रे कर दबा तापिले थैंक यू पिला माने थैंक यू माने देखा हबो पुनी थरे गुटे क्लास रे जो माने चैनल को नुवा करके आछो चैनल को सब्सक्राइब कर दबो बेल आइकन को हिट कर दबो जदरा प्रत्येक टी नोटिफिकेशन ठीक अछि चैनल को एबे ही पिला माने सब्सक्राइब कर दबो ठीक अछि थैंक यू प्ले जय जगन्नाथ।